Through this isoenzyme, drug is metabolized and normally metabolization is done by methylation. Demethylation process से metabolism होता है oxidation से. These two process drug is metabolized and 10% drug is excreted as enzyme through urine. See, excretion is depend upon the age of patient. In some patient it is early excretion, in some patient it is late excretion. So their excretion is depend upon the age of the particular patient. So in this way we can explain the pharmacokinetic properties. Orally absorption is very good. Oral absorption very good. Distributed in all tissues. एक पूरे all tissues में distribute होता है, cross करता है placenta, excreted in milk. 50% drug is bound with plasma protein. Metabolism is done by methylation or oxidation, or 10% drug is excreted as an enzyme in urine. In this way, we can explain the pharmacokinetic properties of theophylline or methylxanthine. Now, next thing is adverse effect. Adverse effect actually it has narrow safety of margin. Narrow safety of margin you can consider not so much safe is there. Safety margin is very narrow. इसका जो safety margin है बहुत narrow है और जो side effect है actually it is depend upon the dose. Dose dependent toxicity is there. Means what? If you increase the dose, the toxicity or side effect is also increase. अगर आप लोग dose increase करते हो तो dose increase करोगे तो उसकी toxicity और side effect भी increase होगा. And the main organ is also side effect is mainly found in your GIT. Which organ is there? GIT is there, CNS is there, CVS is there. These are the main target of this drug. इन drug पे ज़्यादा side effect मिलते हैं. Early symptom of side effect is a headache is there. First is headache is there, nervousness is there, or nausea is there. These are the early symptoms. ये early symptom हम लोग consider कर सकते हैं. Now next thing, as we already discussed the dose dependent side effect like तो as we increase the dose, जैसे जैसे हम dose increase करेंगे वैसे वैसे जो toxicity और जो side effect है वो increase होती जाएगी. So जो early side effect है dyspepsia is there. Dyspepsia में अगर आप dose increase करते हो तो dyspepsia के chances होते हैं. Next what? Indigestion is there. Headache is also there. Nervousness and insomnia. If again increasing the dose, अगर आप dose और increase करते हो theophylline और caffeine का, so tremor is there, restlessness is there. जैसे और आपने dose increase कर दिया तो restlessness, tremor, vomiting, palpitation and dialysis. And again if you increasing dose, अगर और आप dose increase करते हो तो agitation is there, dyspnea is there, means what? Respiration become very frequent, flushing is there, and hypotension is there. If again dose is increasing, अगर और dose increase करते हो तो chances of daily development of failure is there, worsening of your cardiovascular system. Means आपका worsening effect on the cardiovascular system is there. It also increasing the muscle tone. Extrasystolic is there, flash of light and see. If you are again increasing the dose, तो chances of conversion जब भी chances हो जाते हैं, shock is there and arrhythmia is there. And if you are giving me near about again if you are increasing the dose, the chances of death of person is there. So in this way, if you are increasing the dose, side effect is also increasing. Now next thing regarding the theophylline or methylxanthine interaction क्या है? So some agent which increasing inducing the metabolism. Most of the agent अगर कुछ agent है इनके साथ आप लोगों ने theophylline को prefer किया तो what will happen? Chances of metabolism मतलब अगर आपने इन चीज़ों को theophylline के साथ combine किया, अगर आपने स्मोकिंग, फिनोपेन, रिमाक्सिन, फिनोबार्बिटल, शॉर्बट, बॉइल मिल्क इसके साथ थियोफाइलिन को कंबाइन किया तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा. व्हाई सो? बिकॉज दीज आर ड्रग्स व्हिच इंड्यूसिंग द CYP1A2 आइसोएंजाइम और इस आइसोएंजाइम का अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो अल्टीमेटली जो थियोफाइलिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा और इसका मेटाबॉलिज्म होगा. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग के साथ थियोफाइलिन होंगे तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म जल्दी होगा. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दीस ड्रग्स इंड्यूसिंग द आइसोएंजाइम CYP1A2 एंजाइम. ये क्या करते हैं? ये जितने भी ड्रग है ये इस आइसोएंजाइम को इंड्यूस करते हैं. इस आइसोएंजाइम का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होता है इनकी वजह से और इनसे थियोफाइलिन मेटाबोलाइज होता है. CYP1A2 आइसोएंजाइम इससे थियोफाइलिन मेटाबोलाइज होगा. अगर आप इनके साथ कॉम्बिनेशन में दोगे मतलब अगर थियोफाइलिन को कंबाइन करोगे फिनोपेन के साथ
तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ दिस ड्रग इंड्यूसिंग दिस आइसोलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम ड्रग इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। वो कुछ ड्रग है जो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करते हैं। सो व्हाट विल हैपन? अगर थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन इज इंक्रीजिंग। Which drug is there which inhibit the metabolism of theophylline? So erythromycin is there. अगर आप erythromycin के साथ theophylline लेंगे तो theophylline का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा और अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ theophylline will increase in your body. For example, erythromycin, ciprofloxacin, cimetidine, oral contraceptive is there और allopurinol. These are the drugs which inhibit the, ये कुछ ऐसे ड्रग है जो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करते हैं। इफ मेटाबॉलिज्म इज इनहिबिटेड, अगर थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थियोफाइलिन इनहांसेस इफेक्ट ऑफ सम ड्रग। ये अगर आप कॉम्बिनेशन में कुछ ड्रग लेते हो तो उन ड्रग का इफेक्ट इनहांस होता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड, अगर फ्यूरोसेमाइड के साथ थियोफाइलिन लेगा तो इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसेमाइड इज एनहांस्ड। सिम्पथामाइड के साथ इफेक्ट्स ऑफ सिम्पथामाइड इज एनहांस्ड। डिजिटालिस, इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस एनहांस्ड। तो इवन ओरल एंटीकोगुलेंट, इवन हाइपोग्लाइसिक, these are the drug। तो थियोफाइलिन नॉर्मली एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। अगर आप थियोफाइलिन के साथ ये ड्रग प्रेफर करते हो तो थियोफाइलिन इनके इफेक्ट एनहांस करता है। गॉट इट? Normally what will happen if you are combining or if you are taking in combination with these drugs, अगर आपने फ्यूरोसेमाइड के साथ थियोफाइलिन लिया तो इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसेमाइड इज इंक्रीजिंग। व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ थियोफाइलिन इन ड्रग के इफेक्ट को एनहांस करता है। सम ड्रग व्हिच इफेक्ट इज इनहिबिटेड और डिक्रीजेस। तो कुछ ड्रग है अगर थियोफाइलिन के साथ लिया तो इनके इफेक्ट डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल फिनोटाइन और लिथियम, अगर लिथियम और फिनोटाइन को थियोफाइलिन के साथ लिया तो थियोफाइलिन की एबिलिटी है कि इनके इफेक्ट को रिड्यूस करना। ओके, सो इन दिस वी कैन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज दैट अमाइडोफाइलिन के साथ वी कुड नॉट कंबाइन विद सम ड्रग। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन ये पेंटेडिन है, फिनोटाइन है, इनको इन सेम डिफ्यूजन में नहीं रख सकते। सो दीस आर द सम इंटरेक्शन ऑफ थियोफाइलिन और लिथियम। Next category is used in asthma or COPD, that is anticholinergic drug. Anticholinergic drug is also effective in the management and treatment of asthma. Normally what will happen, we already aware that MC receptor. MC receptor is present on your bronchial muscle. MC receptor normally कहाँ present होते हैं? आपके bronchial muscle पे। Whenever cholinergic, whenever acetylcholine is bind and MC receptor, so what will happen? Phospholipase C pathway is activated and this phospholipase C pathway will break down in phosphoinositol diphosphate. This phosphoinositol diphosphate is break down into IP3 and DAN. This IP3 is normally responsible for increase release of calcium. IP3 normally what will happen? MC receptor is present on your bronchial muscle. Bronchial muscle में MC receptor होते हैं और जब acetylcholine का release होता है तो what will happen? Phospholipase C pathway is activated and this phospholipase C pathway will break down your phosphoinositol diphosphate which is present in the cell membrane and which is break down into IP3 and DAN. This IP3 normally operated your calcium channel and more release of calcium. That's why constriction of your bronchial muscles is there. यहाँ पर क्या होता है कि bronchial muscles का constriction होता है, that's why difficulty in breathing is there. So if you are using anticholinergic, this MC receptor is get blocked. उसकी वजह से क्या होता है नॉर्मली कि ये MC रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है और MC रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गया तो व्हाट विल हैपन? व्हाटएवर द कंस्ट्रिक्शन इज देयर इट विल बी ओवरकम और ऑटोमेटिकली ब्रोंकियल डायलेशन इज देयर। नॉर्मली क्या होता है कि MC रिसेप्टर के थ्रू आपका ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। तो जब हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं, इसमें भी एट्रोपिन, इसमें भी प्रोपेनोइड और इसमें भी अलग टाइप की कैटेगरी कि जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो उसका मेन एडवांटेज इज दैट ब्लॉकिंग योर MC रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन योर ब्रोंकियल मसल। वो आपके ब्रोंकियल मसल पे प्रेजेंट होता है और जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होने वाला होता है और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है? ब्रोंकियल डायलेशन होगा और ब्रोंकियल डायलेशन की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है अस्थमाटिक एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस ड्रग, ये एंटीकोलिनर्जिक का ड्रग एक बेनिफिट क्या होता है? इट हैविंग द एंटी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी मींस व्हाटएवर द secretion is totally is blocked by or decreased by this anticholinergic drug के जितने
आपकी सिक्रीशन होते हैं, तो सिक्रीशन ब्लॉक हो जाते हैं, सिक्रीशन रिड्यूस हो जाते हैं, सिक्रीशन भी रिड्यूस हुआ तो आपका म्यूकस का प्रोडक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि म्यूकस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ब्लॉकिंग ऑफ योर एयर ट्यूब। अगर म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो भी आपके एयर ट्यूब को ब्लॉक करता है, और ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ योर एयर ट्यूब चांसेस ऑफ द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज देयर। सो दिस हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ anticoagulative drug. These drugs normally block insulin receptor. Second important thing is whatever the secretion is also reduces due to these two effects. This drug is very effective in the management of asthma or COPD disease. Now, one problem associated with this, there is some side effect of this drug. Constipation is there. Constipation is there because some cholinergic receptor is present in your GI tract, which will be maintaining your peristalsis movement. So peristalsis movement is slightly affected, and that's why constipation is there. Next one is forgetfulness. Forgetfulness means to know what all cholinergic receptor is present in most of the part of your central nervous system. So that the cholinergic receptor is get blocked, forgetfulness is there. Even confusion is there. As we already discussed, that most of the cholinergic receptor is present on your central nervous system. So if this receptor is get blocked, so confusion is there. Even urinary retention is there. Your chances of urinary retention is there because your bladder petrous metal is constricted by cholinergic receptor. If these receptors get blocked, so chances of urinary retention is there. Even sacroplegia is there. Means what? Your development of sacroplegia is there. So these are some side effects or adverse effects which is related with anticholinergic drugs. Which is used in asthma, that is leukotriene antagonist. Example of this drug is montelukast, montelukast is there. Two type of drug which is antagonist of leukotriene. Its name self-indicated. What it will do simply it will antagonize the action of leukotriene. Leukotriene actually this drug, the leukotriene is produced by microphages, eosinophil and other inflammatory cells, and it play very vital or important role in asthma. Leukotriene also play very important role in asthma due to the release of leukotriene and increases, which will be responsible for the bronchoconstriction and the other complication is there. So these are montelukast and zafaricol, what it will antagonize the action of leukotriene. It simply block the receptor of leukotriene. ये simply क्या करते हैं, leukotriene receptor को block कर देते हैं. So if leukotriene receptor is get blocked, so what will happen? Whatever the action of leukotriene is antagonized. For example, the bronchoconstriction is there. Leukotriene is responsible for bronchoconstriction, so ultimately receptor is get blocked. So ultimately bronchodilation is there. Airway mucus secretion is also affected. This through the leukotrienes, airway mucus secretion is enhanced. That is also suppresses. Even muscular permeability is associated with leukotriene. This also is an indicator of even your hyperactivity of your bronchial muscle. Hyperactivity of bronchial muscle is also affected, or this hyperactivity is also reduced. So these montelukast or zafaricol is which is used in mild to moderate asthma. ये जो drug है which is used in mild to moderate asthma, it having some side effect or adverse effect. This drug is very safe. We can consider this drug is very safe drug, but some fewer side effect is there. For example, abdominal pain is there, headache is there, rashes, eosinophilia, production of WBC is there, neuropathy is there. These are some side effects which is related with montelukast or zafaricol, which is used in asthma and mast cell stabilizer. Its name self-indicate. It will this drug sodium chromoglycate 2,5. These drug normally stabilizes your mast cell. Mast cell, if you aware the role of mast cell, mast cell का role पता होगा तो you can easily explain or you can easily understand the mast cell stabilizer. Normally, what will happen whenever antigen-antibody reaction is there, which lead to degranulation of mast cell. और mast cell में क्या होता है normally whenever the degranulation of mast cell is there, which is release of histamine, उसकी वजह से क्या होता है histamine, leukotrienes and other mediator is released. Mast cell में क्या होता है histamine, mast cell is responsible for the storehouse of your histamine and other mediator. Mast cell में बहुत सारे mediator store होते हैं. So whenever the antigen-antibody reaction is there, which lead to degranulation of mast cell. Mast cell का degranulation होता है when degranulation is there, which lead to releases of histamine. And we are already aware that histamine is mainly responsible for asthma. Histamine जो स्टेंसिल अस्थमा होता है उसके लिए mainly responsible होता है. जब histamine का release होता है तो certain complication is there, which lead to bronchial constriction, inflammation and other things is there. So
histamines will play important role in asthma. So what will happen? These drugs stabilizes your mast cell. So if mast cell is get stabilized, the mast cell stabilized so that so no degranulation is there, no release of the radiator is there. Radiator का release inhibit होगा, and if radiator release is inhibited तो ultimately effect on your asthma it will be overcome. जो complication of asthma को overcome हो जाएगा और जो complication है वो भी resolve हो जाएगा. तो normally ये जो drug है ये आपके मास सेल को stabilize करते हैं और मास सेल stabilize होने की वजह से उसका degranulation नहीं होता, and if degranulation is not there तो no release of various radiator is there for mostly histamine का release नहीं होगा, histamine का release नहीं होगा तो asthma की complication it will be overcome. Say sodium the picrophecin एक additional activity antihistaminic activity. ये antihistaminic activity है, बाकी दोनों जो ड्रग है showing in the both activity. Which is doing asthma that is corticosteroid. Corticosteroid actually not having the dilation property. It will not able to dilate the vessels or bronchial muscle. Corticosteroid normally dilation की property नहीं होती, but this corticosteroid play important role in reducing inflammation. Inflammation reduce करने के लिए important role play करता है और it is also responsible for reducing the degranulation of mast cell. Mast cell का release भी reduce होता है, inflammation reduce होता है. So it having certain properties. It will it also inhibit the reaction of antigen antibody and antigen antibody का reaction कितने करनी होती है? antigen antibody का reaction में यार reaction की यूनिट्स जो हम लोगों ने देखा कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स है. तो ये दोनों रिएक्शन को स्टेबलाइज करते हैं, दोनों का रिएक्शन नहीं होने देता है. सपोज फॉरेन मटेरियल इज एंटरिंग योर बॉडी, फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर होते हैं तो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है. फॉर एग्जांपल IgE. तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है जो मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से वो भी चीजें reduce हो जाती है. It will mainly play important role in your inflammation, is reduces your inflammation. Now next category which is used in asthma that is anti-IgE drug. Next category that is anti-IgE antibody. This type of category, example is over here. This type of category normally work against IgE. IgE you will already aware this. When the production of IgE is increases in our body, so which lead to interaction of antigen antibody and this IgE is responsible for degranulation of mast cell. तो जो ये जो ड्रग है इसको स्टेबलाइज करता है, इसको स्टेबलाइज करने से जो अस्थमा के कॉम्प्लिकेशन है मतलब इसको स्टेबलाइज करने से क्या होगा डीग्रेनुलेशन नहीं होगा मास्ट सेल का और मास्ट सेल से हिस्टामाइन और अदर मेडिएटर का रिलीज नहीं होगा. और आपको पता है अगर हिस्टामाइन का रिलीज रिड्यूस हो गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस होगा. So these are the drugs which are normally utilized in the management or treatment of asthma or COPD disease.